हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं हूँ रेडिशन ब्लू गुवाहाटी फॉर दी लॉन्च इवेंट फ्रॉम बजाज। तो आज बजाज ने बेसिकली 3 प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एक कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट है एंड 2 अपडेटेड मॉडल्स। तो हियर इज़ द न्यू बजाज N160 बेस्ड ऑन दी N250 and F250। सो यहाँ पे N और F250 का भी अपडेटेड मॉडल्स आया है। आई विल शो यू दैट एज वेल, बट फर्स्ट विल गो टू दी N160 एंड सी कि क्या क्या है इस नई N160 में। सो दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम बजाज। सो पहले जो बजाज को 160 वर्जन था दैट वाज बेस्ड ऑन दी NS सीरीज, बट दिस वन इज़ अ कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दी N250। सो दिस वन इज़ दी N160। सो लुक वाइज दिस इज़ कम्प्लीटली सेम एज दी N250। इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, जो कुछ डिफरेंस है I'll tell you। So basically this is the main change is the engine power। So the earlier one has 250cc engine, now this one has 160cc engine। Like I said, this is the same as the N250। देखने में काफ़ी सही है, बहुत ही शार्प डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। आपको सामने मिल जाएगा LED। इफ आई कैन जस्ट शो यू, तो सामने आपको मिल जाएगा LED DRL, जो कि काफ़ी एक शार्प, एक वोल्फ की आई की तरह एक डिज़ाइन दिया गया है। उसके सारे आपको मिल जाएगा बाई डायरेक्शनल LED हेडलैम्प। बाई डायरेक्शनल दैट मीन्स इसमें अपर और डिपर एक ही यूनिट के अंदर होता है, व्हिच बेसिकली सेव्स वेट। तो काफ़ी सही है, बट हाँ, वन डिज़ाइन चेंज इज़ दी टर्न इंडिकेटर। सो इफ़ यू गो फॉर दी N250 एंड F250 देयर विल गेट LED टर्न इंडिकेटर्स, बट इसमें आपको LED टर्न इंडिकेटर्स नहीं मिलेगा। यू विल गेट हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स। रेस्ट ऑलमोस्ट सेम, टायर साइजेस एंड एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम। एंड बजाज ने ये जो N160 है, दे हैव लॉन्च इट इन 2 वेरियंट्स। वन इज़ दी सिंगल चैनल ABS एंड द अदर वन इज़ द डबल चैनल ABS। सो द ब्लैक एंड ग्रे this model is of the double channel ABS। you can know it by looking at these sensors। if you can show you here। तो इसमें आपको आगे और पीछे दोनों पे ही में आपको मिल जाएगा dual channel ABS। and the other two, red and blue, these two doesn't have the dual channel ABS। this one is the single channel ABS। now if I talk about the price, so if you go for the dual channel ABS it will cost you around 1,28,000 ex-showroom Guwahati, and if you go for the single channel ABS it will cost you around 1,23,000। so डिज़ाइन वाइज काफ़ी इम्प्रूव्ड एक डिज़ाइन है ओवर दी N160 NS, एंड दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द कूलेस्ट एंड स्ट्राइकिंग लुकिंग 160cc बाइक इन द सेगमेंट। नाउ द बिगेस्ट USP ऑफ दिस N160 इज द स्लीपर क्लच। यस, दिस इज द ओनली 160cc बाइक इन इंडिया दैट does come with the slipper clutch, which is I think a very great initiative from Bajaj, that उन लोगों ने इस 160cc सेगमेंट में इस प्राइस रेंज में they have, you know, they can add the slipper clutch, which basically improves your downshifting, smoothens the engine during the downshifting, and also controls the engine braking. Now if I come to the instrument console, this is the same, like I said, this is the same unit as the N250 or F250, infinity display, they call it infinity instrument console। so इसमें semi digital instrument console मिल जाएगा। tachometer is in the analog format and the rest of the information are in the digital format। if I talk about the speedometer, fuel gauge or the gear position indicator, all are in the digital format। so बहुत ही सही एक डिज़ाइन बनाया है, इम्प्रूव्ड, बिकॉज यू नो व्हेन दे लॉन्च द N250 एंड F250 दे गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। नाउ जब मार्केट का रिस्पॉन्स अच्छा है, सो दे थॉट व्हाई डोंट वी लॉन्च द 160 इन द सेम अटायर। नाउ वन मोर डिज़ाइन फीचर which I really like about the N160 is the USB चार्जिंग सॉकेट, एंड दे हैव प्लेस्ड द चार्जिंग सॉकेट वेरी कन्वीनियंटली। तो अगर आप यहाँ पे मोबाइल होल्डर लगाते हो तो बहुत ही ईजीली आप लोग इस USB चार्जिंग सॉकेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। So this is basically overall look or walk around of the N160। now if I talk about the wheel size, so front you'll get 100 section टायर्स एंड रियर विल गेट 130 सेक्शन। फ्रंट में आपको मिल जाएगा 300 mm का डिस्क ब्रेक, एंड रियर विल गेट 240 mm, 240 और 230 आई गेस, 240 mm का रियर डिस्क ब्रेक। एंड इफ आई टॉक अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, इसमें आपको मिल जाएगा 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि सिटी राइडिंग के लिए सही है। नॉर्मल थोड़ा बहुत पॉट होल्स या स्पीड ब्रेकर के ऊपर से बहुत ही आसानी से ये बाइक चला जाएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी टैंक कैपेसिटी, इसमें आपको मिल जाएगा 14 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रेंज आपको देगा। दिस इज सिंस दिस इज अ 160cc बाइक, सो आई एम श्योर माइलेज गोना बी वेरी गुड। एंड इफ आई कम टू द रियर में भी सेम एक एक्स टाइप का डिज़ाइन LED डिटेल आपको मिल जाएगा, which looks very cool from behind। Now let's hear the exhaust note of the bike। So unlike the F250 and N250, उसमें आपको मिल जाता था dual barrel exhaust, but in case of the N160 they again went back to the underbelly exhaust, जो कि मुझे पर्सनली बहुत सही लगता है। जो underbelly exhaust है उसका एक तो it basically keeps the center of gravity very balanced, as well as इसका साउंड बहुत ही सही लगता है। Now let's hear the exhaust note of the bike। So
The exhaust note is quite different than the F250 and N250, I'm sure about that. So it does have the bassy note in it, and it's quite smooth as compared to the other 160. The only bike that I like about the exhaust note in the 160cc category is the Apache RTR 160, and this bike does sound better than that. And इसमें आपको मिल जाएगा underbelly fairing, which is non-metal. This is kind of a plastic thing, but it definitely protects. It's gonna protect the engine and the underbelly section from small gravels. Now इसमें आपको मिल जाएगा box swing arm, not the aluminum one. So basically 160cc category, and its price range में I think this is quite good. So this is all about the N160. Now let's go to the F250. Now the only change in the new F250 and N250 is the ABS. So the earlier जो version था F250 and N250 का, उसमें आपको मिल जाता था single channel ABS. Now they have updated it and they have added ABS in the rear wheel as well. तो इसमें आपको मिल जाएगा dual channel ABS. So rest all is same specification, everything is same as the older one. And I have already done a detailed review of the F250. That's already in my channel. You can go and check that out. Now the last model that I'm gonna show you is the updated version of the CT. So पहले का जो CT था, that came with an 110cc engine. Now this was a completely redesigned engine, 125X, CT 125X. So this one comes with an 125cc air cooled engine. So ये जो इंजन का चेंज जो किया बजाज ने, बिकॉज ऑफ दैट 2.5 bhp का पावर इम्प्रूव हुआ है. द अर्लियर मॉडल केम विद 8.4 bhp का bhp पावर, एंड दिस वन नाउ हैज़ 10.9 bhp पावर. सो ये जो पावर में बम्प हुआ है, दैट विल डेफिनेटली गोना इम्प्रूव द राइडिंग डायनेमिक्स और द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक थ्रू आउट द सिटी एंड हाईवे राइड एज वेल. सो बाइक डज लुक वेरी good in this segment. So this also comes with two variants. One is the drum one and the other one is the disc one. So these are the all three models that Bajaj has launched today, and I'm sure this new 160 N160 gonna kill the market with a lot of bookings and sales. सो इस N160 एंड जो CT 125X है, उसका एक डिटेल रिव्यू बहुत ही जल्द मेरे चैनल में आने वाला है. तो स्टे ट्यून फॉर दैट. आई विल टेक दी N160 आउट फॉर स्पिन एंड आई विल टेल यू क्या क्या प्रोज है, कौन से है, एंड चलाने में कैसे, इज इट स्टिल एज एजाइल एज दी F250. सो आई विल टेल यू एवरीथिंग इन दैट वीडियो. सो स्टे ट्यून फॉर द वीडियो, एंड वो वीडियो देखने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस द वीडियो व्हेन आई अपलोड इट. So this is all about the new products from Bajaj, and congratulations Bajaj for launching this N160, which is definitely one of the most striking looking bike in this segment. तो आज के लिए इतने ही दोस्तों. आज यही था एक स्मॉल लॉन्च इवेंट फ्रॉम बजाज. आई होप मैंने आप लोगों को तीनों बाइक अच्छे से दिखा दिया है. सो आप लोगों का क्या ख्याल है इस नई N160 के बारे में? व्हाट डू यू थिंक इज दिस बेटर देन दी competition? If I talk about the competition, so this one is going to compete against the RTR 160, then FZ, then Gixxer 155. So competition is really very tough because the 150 and 160 segment are full of bikes and different kind of models, performance bike or commuter bike. So this one's going to be very difficult for Bajaj as well. So I hope this N160 is definitely going to perform very well. So do let me know in the comment section आप लोग क्या सोचते हो इस नई N160 के बारे में. बिकॉज डिज़ाइन लाइक आई सेड इज़ ए वेरी सब्जेक्टिव मैटर. तो मुझे बताइए कि लुक आपको कैसा लगा एंड ओवरऑल बाइक आप लोगों को कैसी लगी. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस. मैं फिर से आऊँगा आप लोगों के बीच एक नई कार या बाइक का रिव्यू लेकर. तब तक आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए. दिस इज़ ज्योति साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय.